कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। All right, interesting there. Amit Shah saying that the whole reason behind the protest today by the Congress party, he cannot understand that. There was no questioning that happened today. There was no summons that had been issued for today. What led to the Congress party turning out on the streets? Let's get Mohit Bhatt on the phone line. Also Sanjay Jha, suspended Congress leader. But this is the Home Minister basically lashing out at the Congress. Let's listen in again, in fact, to earlier the 3-point charge that was made by Rahul Gandhi saying that democracy has died in the country. Hitler also used to win elections. That should not be in any way considered a measure of how a democracy is faring, and that the Congress is today going to be on the streets speaking for the people on the issue of price rise and inflation. All right, the dramatic images there earlier of the entire Congress party turning up all in black, led by Congress leaders Priyanka Gandhi Vadra and Rahul Gandhi. Across the country, similarly, there were also protests that took place. We will replay what Amit Shah said in just a second. More interesting that Amit Shah seems to say that this wasn't about inflation or price rise. It was, at the end of the day, about the questioning of the Gandhis. Well, yes, and you see, this has been the sense on the ground that since the time the Gandhis were being called by the Enforcement Directorate and their questioning was going on regarding the National Herald case, we saw that earlier also when Rahul Gandhi was questioned, the Congress workers from all throughout the country descended to Delhi, and same was the case with Sonia Gandhi. Now, BJP has been saying this. It's not the protest that happened today by the Congress party was not against GST or not against the price rise or not against the economic crisis. It was just to deviate the attention of the country from the National Herald scam, and that is why all the Congress workers have descended to Delhi, including the top-notch leaders. So what Amit Shah said is towing the same line. He has said that the law should be followed, and this is what being said by the BJP, that the law of land should be
be followed. If they haven't done anything wrong, then why exactly they are scared? But today, all the Congress leaders basically stated that this protest is against the price rise. This protest is against the GST leveled on certain food items and also on the economy that is shrinking as per the opposition. In fact, let's listen in again to what the Home Minister said about the Congress's run today. देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का, ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है, न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। All right, so Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, they're fighting on the street. Now Amit Shah saying that this was not about picking up issues of the people, but this was essentially about lashing out against the agencies. Ravi Shankar Prasad also in the afternoon asked whether price rise was only an excuse and browbeating and intimidating any agency, especially the Enforcement Directorate, which is investigating the Gandhis in the National Herald case, if that is the real objective. All right, in fact, the various reactions that we had of the Congress leaders where Mr. P. Chidambaram earlier in the afternoon was heard wondering to Rajiv Shukla, how can anyone go out when it was raining? Remember, there was heavy rains in the national capital in the morning. Subsequently, there was a war of words between the two parties. Salman Khurshid, when he was questioned in the afternoon about the real objective of the protest, said that the family has protected us for long, now it's our turn. परिवार को बचाने के लिए मैं क्यों आऊंगा? मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा। मेरा नेता मुझे बचाता है। अगर इसको वो परिवार की परिभाषा बना देते हैं तो मुझे कोई उसमें कष्ट नहीं। All right, senior journalist Mr. Rajgopalan is here with us on the phone line. Mr. Rajgopalan, Amit Shah saying that the Congress's real mode and intent of protest. All right, Manickam Tagore. Let me first go across to Mr. Manickam Tagore of the Congress with us on the phone line. Mr. Tagore, you just heard the Home Minister Amit Shah. He said,
We don't know why the Congress is on the streets today. There was no summons. There was no investigation today. There was no questioning. What was the point? Sir, can you hear me? Mr. Tagore? Apparently not. All right, we'll try and get back to Mr. Tagore in just a second. Mr. Rajgopalan, if you can take that question. The Congress is saying it's about price rise and inflation. Right, we don't have Mr. Rajgopalan either. Let's listen in to what Rahul Gandhi said in the afternoon. How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है. My job is to resist the idea of the RSS. That's my job. And I'm going to do it. The more I do it, the more I will be attacked. The harder I will be attacked. I am happy. Attack me. हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था. हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था. हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे. मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है. कांग्रेस लीडर उदित राज here with us on the phone. उदित राज जी, अमित शाह कह रहे हैं कि किस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा. आज तो कोई क्वेश्चनिंग भी नहीं थी. नहीं, अमित शाह जी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके 2 ही लोग हैं जिनकी चिंता वो करते हैं, अडानी अंबानी की, और तो खुद तो माला माल है ही हैं. जब देश की 80 करोड़ जनता को सरकार के राशन से जिंदगी गुजारना पड़े और सब पर जीएसटी ठोक देना, मौत पर भी, बच्चों जन्म पर भी, तो उन्हें कहाँ अंदाज पता लगेगा. ये तो कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, दलितों, पिछड़ों के लिए करती रही है. वो दर्द को महसूस करती है. उन्हें महंगाई का, बेरोजगारी का दर्द कहाँ महसूस होगा? तो कैसे महसूस करेंगे? ये तो कांग्रेस पार्टी करती है जिसने देश बनाया है. ये लोग तो अंग्रेजों के साथ पे रहे हैं. ये तो देश के साथ रहे ही नहीं, तो इनको अंदाज कहाँ हो सकता? अमित शाह जी को कहाँ से अंदाज मिल जाएगा? ओके, उदित राज जी, आपका बहुत धन्यवाद. Just a second, let me also go across to Mr. Manickam Tagore, Member of Parliament. Mr. Tagore, I don't know if you heard the Home Minister or not, just remarking on what the real intent of the Congress protest is. He's asking, why is the Congress out on the streets when today there was no investigation, no questioning, no summons? Home Minister must understand that in parliamentary procedures, we had given an adjournment motion on price rise and the GST tax rate. And we wanted an answer from Honorable Prime Minister. Because in the price rise discussion in Parliament, FM gave a political speech. She has not given any solution. Therefore, we wanted a discussion in the Parliament. We had moved an adjournment motion. The Home Minister should see the Parliament procedure also. We had given an adjournment motion for a discussion on price rise. If Mr. Amit Shah is not following that in a proper way, means this is the sorry state of India. We have to understand that prices are essential commodities are skyrocketing. The LPG gas cylinders are in historic high. Is more than 1,083 rupees. People are not using gas cylinders now. This is a big. We are into a big issue. A real. Mr. Tagore, it's very interesting that Amit Shah also said, because today is the 5th of August and today is the day when the Ram Janam Bhoomi Pujan was done, he said that the Congress wore black clothes because they want to give a subtle message to promote their appeasement politics, because today the foundation for Ram Janam Bhoomi was laid. Your response? He's connecting it to the Ram Janam Bhoomi Puja and you wearing black clothes. You have to understand it that Mr. Amit Shah always uses everything in a communal language. We don't do it. We always think that it is for, if you want a symbol of protest, we are wearing a black shirt. Black shirt is very liked by Sanishwara also. Therefore, let Amit Shah, in his language, they can tell to him, mean the Sanishwara also likes the color called black. It is not protest against Ram.
He has to understand it. We are protesting against these Gauravas who are looting this country and have to go to the two big corporate friends of them. So Amit Shah should understand he is in a responsible position and he should speak responsibly. When we are protesting against the real issues of price rise, GST rate to be reduced, and we wanted a discussion, and we wanted from Prime Minister to intervene in that discussion. They are making it so simple and so divert. They are using the divertory tactics to divert it to a communal angle. Okay, so there is. Very sorry. Okay, so the Congress is denying any link whatsoever to the Ram Janam Bhoomi Bhoomi Pujan being done 2 years ago, and to their protest today, the Home Minister making the comparison that this is perhaps a subtle message. Congress saying we do not communalize. Thanks very much, Manickam Tagore, for having joined us. A very quick break, much more on the other side.